Hello students, welcome to the political science class. Today's topic is communalism, a challenge to nation building in India. In India, nation building is a long term continuous process, and as India is a state or nation of diversities and full of pluralistic, so to maintain nation building here is a difficult task, and communalism is the one of the challenge to the nation building in India. Communalism in a broad sense means a strong attachment to one's own community. In popular discourse in India, it is understood as unhealthy attachment to one's own religion. Communalism has been generally derived from the word community, and community can be formed on the basis of race, sex, language, place of birth, religion also. But basically in India, it has become a general practice. While we refer to the term communalism, we refer it to the religious based communalism. So, while we are showing love towards our own community, it is not a wrong thing or it is not a difficult task, but while we are showing hatredness towards other community, it becomes a challenge to the nation's unity and integrity. ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରିକି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ, ତାହା ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। It is an ideology that every group strives to impose its identity and dominance over others. In this way, it promotes belief in orthodox tenets and principles, intolerance and hatred of other communities, and thus divides the society. So, while one community tries to reflect dominance over other community and it shows the principle of intolerance and hatredness towards other community, it becomes a challenge to the nation building. So, community will be there, at no cost we cannot eradicate community, but at the same time there should be coordination and cooperation between different communities. But it becomes a problem when one community tries to dominate the other community and tries to show hatredness and intolerance towards other community. संप्रदाय रहिबो आम समाज रे, संप्रदाय को कोनोसी प्रकार रे आमे विलोप करि परिबा नाही। जाति रहिबो, धर्म रहिबो एवं ताकु नेकी संप्रदाय मध्य रहिबो। मात्र गोटे संप्रदायर लोक माने जेतेबेले अन्य संप्रदाय लोकंकु तांकर घृणा भाव प्रदर्शन करती सेतेबेले एहा जाति निर्माण पई समस्या सृष्टि करिथाय। Positive aspect of communalism stands for the affinity of an individual towards his own community, involving efforts for the social and economic upliftment of his community. However, in negative connotation, it is an ideology which emphasizes the separate identity of a religious group in relation to other groups with a tendency to promote its own interest at the expense of the others. So, communalism has two aspects, positive aspect and negative aspect. Positively, while one community or a group of people belonging to a particular community, they try and strive hard for their upliftment, then that is going to be reflected in the feelings of the communalism. But their identity and their wanting or willingness towards prove their identity is not a wrong thing, but while they try to do it at the cost of other community, that becomes a challenge. So, सकारात्मक दृष्टिकोण कहले सांप्रदायिकवाद आमर गोटे संप्रदायर अभिवृद्धि को बुझाए बा गोटे संप्रदाय बा गोटे गोष्ठीर लोक माने जेतेबेले निज संप्रदाय निज गोष्ठीर अभिवृद्धि उपर अत्यधिक गुरुत्व आरोप करती एवं
समाजर शीर्ष स्तर व शीर्ष सोपान में पहुँचापी कि सर्वदा चेष्टित रहती ताहा सांप्रदायिकवाद को प्रतिफलित करें एवं यही प्रतिफलन में कौन प्रकार समस्या ना मात्र से जितेबाला निजर अभिवृद्धि अन्य गोटे संप्रदायर मूल्य करती ताहा जाति निर्माण प्रति विपद सृष्टि करें। Communalism as a political philosophy has its roots in the religious and cultural diversity of India. आमर भारत जो सांप्रदायिकवाद देखा देउछि ताहा विशेष करिकि भारत जो विभिन्नतार राष्ट्र जो सांस्कृतिक बहुमुखीतार राष्ट्र सेइथिपई के यह संभवतः सृष्टि होइछि। It has been used as a political propaganda tool to create differences and tensions between the communities on the basis of religious and ethnic identity, leading to communal hatred and violence. In India generally, we are going to feel the feelings of communalism through communal violence. And why there has been communal violence in India? Because when a group of people, by being motivated by their political leaders for wrong achievement, they try to spread communal feelings among their community that takes the form of the communal violence. भारत में साधारणतः आम सांप्रदायिकवाद को सांप्रदायिक हिंसा रूप में ही देखा पाई था। तेणु जो सांप्रदायिक हिंसा केतेबेले रूप निए विशेष करके आमर जो राजनैतिक व्यक्तिविशेष माने अच्छी सेमानकर हीन स्वार्थ को चरितार्थ करने बेले बेले लोक मानू प्रेरित करती एवं लोक माने सही प्रेरणा प्रेरित होई हिंसा सृष्टि करती जहाद्वारा साधारण लोक माने विशेष भाव में क्षतिग्रस्त होगा सहित यह हिंसार गोटे गोटे बलिदान माध्यम हो जाती। इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी पीपुल ऑफ डिफरेंट फेथ कोएक्जिस्टेड पीसफुली। बुद्ध वाज परहैप्स द फर्स्ट इंडियन प्रॉफिट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। कौ आबहमान कालरू भारत में विभिन्न धर्मावलंबी लोक मैंने बसवास कर आसुँच एवं सेमानक भितरे शांतिपूर्ण सहावस्थान वर्ष वर्ष धरी रही एवं आमे जो आज धर्मनिरपेक्षतार जो चिंताधारा प्रचार करुचु प्रसार करुचु बहुत वर्ष पूर्वे महात्मा बुद्ध ताकू प्रचार करथिले बोली आमे तांको प्रथम प्रचारक धर्मनिरपेक्षर प्रथम प्रचारक भाव में बेले बेले अभिहित करिथाउ। Meanwhile, kings like Ashoka followed a policy of peace and religious tolerance. While religion was an important part of the people's lives, but there was no communal ideology or communal politics. आमर केउ आबहमान कालरू जो विभिन्न धर्मावलंबी लोक मैंने बसवास करुले विभिन्न संप्रदायर सम्राट माने भारतर देशवासी को विभिन्न समय शासन कर आसिचंती किंतु सेमानक समय शांति सहावस्थान परिलक्षित हेउथिले मध्य एवं धर्म मनीष मानकर बा भारत में बसवास करुथिबा लोक मानकर गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग हेइथिले मध्य सांप्रदायिक हिंसा बा सांप्रदायिक राजनीति भारत में परिलक्षित हेउनथिला। The first instance of communalism broke out on the eve of Indian National Congress opposition to the Parliamentary Reforms Act 1909 that provided for separate electorate to the minority community. क्योंकि धर्म ना जो सांप्रदायिकवाद सृष्टि है इंडिया रे बा भारत में आम एथिपाई कि विशेष करिकी ब्रिटिश उपनिवेशवाद को दायी करिथाउ काहेकि ना सेई माने ही प्रथमे मल्लेमेंटो अधिनियम माध्यम रे पृथक निर्वाचन मंडली सृष्टि करथिले संख्यालघु मानक पई कि गोटे निर्वाचन मंडली एवं अन्यान्य वर्गर लोक मानक पई गोटे निर्वाचन मंडली जहाँ प्रथमे भारतर नागरिक मानक मध्यरे विभिन्नतार मंजी बुणीथिला। The major factors that contributed towards the emergence and growth of communalism in modern India involves various regions. There has been various regions which are responsible for the spread of communalism in India, and specifically we blame British imperialism and their policy of divide and rule policy. As we have discussed earlier, the separate electorate for the community, minority community, that is the first reason behind the spread of communalism. So, the Britishers followed the principle of divide and rule policy to suppress the nationalist movement of India. भारतर स्वाधीनता संग्राम को चापी देबा पाई से माने
यही विभाजन नीति प्रथमे प्रयोग करथिले जहाद्वारा जो भारतर जो मुख्य दुईटा गोष्ठी थिले धार्मिक गोष्ठी हिंदू एवं मुस्लिम सेमानक भितरे ए विभिन्नतार मंजी से माने प्रथमे बुनी थिले। And the second reason was disappointment and disaffection among young and aspiring middle class youth caused by stagnant agriculture, absence of modern industrial development and inadequate employment opportunities which is being exploited by political opportunities. आमर विशेष करी अधिकांश जो सांप्रदायिक हिंसा परिलक्षित होछि सेथिरे भाग नेउथिबा संख्यागरिष्ठ लोक माने हेउचंती आमर युवक संप्रदाय एवं युवक माने जेहेतु निजको अवहेलित मन करूचंती एवं सेमाने बेकारी समस्या रे जर्जरित सेमानक पाखरे किछि नियुक्ति नाही एवं आमर कृषि एवं शिल्प व्यवस्था सेतिकी पर्याप्त परिमाण रे नियुक्ति सृष्टि करि पारु नाही जहाद्वारा सेमाने विभिन्न व्यक्ति विशेषज्ञ द्वारा प्रलोभित हो विभिन्न आतंकवादी कार्यकलाप एवं ये विभाजनकारी कार्यकलाप रे संश्लिष्ट रहउचंती एवं विभिन्न दंगा समय रे हिंसा समय रे सेमानेकर मुख्य भूमिका रहुछि। Then backwardness of minority community. So it is essential that in India in every area there has been a majority group, there has been a minority group, and the persons who are minority they are backward in nature, socially as well as also economically, and their backwardness are creating alienation amongst themselves. आमर जो संप्रदाय संख्यालघु संप्रदाय अच्छी से जेहेतु सामाजिक आर्थिक एवं शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर बा पछुआ तो सेमानक भितर गोटे एकाकीकत्वर मनोभाव सृष्टि होछि एवं सेही मनोभाव बेले बेले सांप्रदायिकवादर रूप नेउछि। ए कम्युनल एंड डिस्टर्टेड व्यू ऑफ इंडियन history. So naturally we come to history through the historians. So if historians will not write history in a neutral way, then there will be problem for us, because it is not possible for us to go back to the history and to search what is right and what is wrong. So historians should be neutral while they are writing histories, but sometimes it has been found that our history has the touch of communalism. So because of this reason our communalism is going to be spread. जदि आमर इतिहास को आमे निरपेक्ष भाव में उपस्थापित न करिबा ताहाले आमे सत्य इतिहास को ठीक भाव में जानि परिबा नाही एवं इतिहास जदि सांप्रदायिक सह संश्लिष्ट हेबो बा ऐतिहासिक माने जदि इतिहास को सांप्रदायिकवादर रूप देबे ताहाले ताहा आम समाज प्रति विपद सृष्टि हेबो काहेकि अन्य कोनोसी बाट नाही जहा द्वारा आमे पूर्व इतिहास को फेरी जिबा एवं निजे निजे प्रमाण करिबा कोटा ठीक कोटा भूल। तेणु इतिहास संपूर्ण निरपेक्ष भाव में आमर भविष्यतर पीढ़ी मानक ऊपर पाखरे उपस्थापित हेबा आवश्यक। देन separatism and isolation feelings among minorities, as we have discussed earlier, as minorities are backward, as various provisions are also neglecting or government is not making special provisions for the development of the minorities, they are feeling separated, they are feeling isolated, and these feelings are going to be reflected in their activities, in their behavior during the communal violence. तेणुकरी ये जो संख्यालघु संप्रदाय आम देश में अवस्थान करुछंती सेमानंकर अभिवृद्धि पाई सरकार जेहेतु कौनसी प्रकार विशेष पदक्षेप ग्रहण करूनाहांती एवं साधारणतः सेमाने सामाजिक अर्थनैतिक एवं शिक्षा क्षेत्र में अनग्रसर अच्छंती एवं विभिन्न प्रकार सरकारी पदपदवी ठारू आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र में सेमानंकर आवश्यक अनुपातिक उपस्थान रहू नाही तो सेथिपाई सेमाने निजको एकुटिया मनोभाव करुचंती एवं जहार प्रभावटा सांप्रदायिक हिंसा समय आमे उपभोग करुछु। देन राइज ऑफ communal and fundamentalist parties and associations also. So in India there has been some political parties, some associations, organizations are there who are working for the cause of the religion. So it is not wrong to form association on the ground of the religion, as we enjoy the freedom to form associations and the unions, therefore we can form it. But our associations should work only for our development. It should not work for the creating hatredness towards the others. But sometimes it happens that some political parties, associations and organizations, they instigate people to create
violence by which mob violence are going to be spread. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଗଠନ ସଂଘ ଆମେ ଧର୍ମ ନାଁରେ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁକି ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକତାର ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମନୋଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କନଭର୍ସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ଆନଦର ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆମେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ଆମର ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ତାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ତାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ବା ଆମକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସୋ କନଭର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍, and as in case of India, all of us are enjoying right to freedom of religion. We have freedom to accept any religion on our own. We can propagate, practice and spread our religious beliefs, but it should not be done forcibly. Nobody should force us to adopt or to accept a particular religion, but it is happening, and when it is happening, it is creating problems in our society. So the next cause is communal media and the literature. Presently in India we found that there has been media and literature which has also the communal links. There, once upon a time we have only one media that is going to be controlled by the government. So at that time we are blaming that media is giving news or the information which is pro-government. And when there has been more media, we are expecting that we should get the neutral information. But it is not happening now. Some media are still playing the role of some partiality. They are reflecting in their news, and they are inclined to a particular groups of people. They are inclined to a particular political parties. So because of that, your media is also helping to spread the communal violence in case of the India. So whether it is media and the literature, if it will have the communal touch, then it will also spread the communalism. ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପ୍ରତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସେହି ପ୍ରକାରର ଖବର ସରବରାହ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। Major incidents of communal violence in India. Starting from the independence movement, we have faced various types of the communal violence in case of India. Communal violence is a phenomenon where people belonging to two different religious communities mobilize and attacks each other with feelings of hatred and enmity. The partition of India witnessed mass bloodshed and violence that continued up to 1949. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ବିଭାଜନ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେଇ
विभाजन समय देश विभाजन समय जो हिंसा ताकू भारत केबे भी भूली पारिबो नाही। In 1960s, a series of riots broke out, particularly in the eastern part of India, Raurkela, Jamshedpur and Ranchi in 1964, 65 and 67, respectively, in places where Hindu refugees from then East Pakistan were being settled. In September 1969, riots in Ahmedabad shook the conscience of the nation. विभिन्न समय रे विभिन्न कारण जो भारत में सांप्रदायिक हिंसा घटी केतेबेले आमर अन्य देशर आसुवा शरणार्थी मानक नहीं समस्या सृष्टि होती केतेबेले आम देश भितर बसवास करुवा दुईटी मुख्य संप्रदाय भितर सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि होती तेणुक जितेबले आमर पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जितेबाला तार स्वाधीनता लाभ कला सेठू आसीथिबा हिंदू शरणार्थी को लेकिन मुख्यतः आमर पूर्व भारत में हिंसा देखा देथिला एवं सेथुरु ओडिशार राउरकेला मध्य बाद जाय नथिला। In October 1984, the anti-Sikh riots broke out after the assassination of Indira Gandhi, where more than 4,000 Sikhs were killed in Delhi, Uttar Pradesh and other parts of India. So खाली हिंदू मुस्लिम को लेकिन सांप्रदायिक हिंसा है नहीं सिख मान को लेकिन मध्य है जेतेबेले आमर से समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हत्या करागला तार प्रतिवाद रे उत्तर प्रदेश दिल्ली रे हजार हजार सिख मानू मृत्युदंड माने मृत्युर सम्मुखीन होगापाई पड़ता यही सांप्रदायिक हिंसा मध्यम द शाहबानो कंट्रोवर्सी इन 1985 and the Babri Masjid Ram Janmabhoomi controversy became the powerful tools for intensifying communalism in the 80s. 80 दशक आमर राम जन्मभूमि विवाद एवं शाहबानो केस होची अन्य मुख्य दिग जो कि भारत गोटे मुख्य सांप्रदायिकवाद हिंसा आड़ को गति करिथिला। The communal violence touched its apogee in December 1992 when the Babri Masjid was demolished. जेतल बाबरी मस्जिद को भंगा जाइथिला 1992 मसीह संपूर्ण भारतवर्ष सांप्रदायिक हिंसा को सामना करिथिला एवं ताहार बहुत नकारात्मक प्रभाव मध्य भारतर लोकमान को ऊपर पड़िथिला। In 2002, Gujarat witnessed communal riots when violence was triggered by burning of a train in Godhra. जेतले गुजरात रे 2002 मसीह ट्रेन पोड़ी होता ताकू नहीं कि हिंसाकांड परिलक्षित होता। Then for this type of the communal violence there has been various factors which are responsible for the communal violence in India. As we are saying that communalism will be there as long as community is there. So religion, caste, language is the part of our human life. So we cannot leave it, or it is not possible by leaving it to survive. So it will be part of our life, so community will be there. But to maintain harmony within the community is a very difficult task, like in a country like India, where there has been various groups of the people are staying on the basis of the language, religion and the caste. So there has been various contributory factors which are intensifying the communal violence in India, and we will discuss about that. को उपादान गुड़िक भारत में हिंसा को अधिक माने सांप्रदायिक हिंसा को अधिक बलवत्तर करने की चेष्टित से उपादान गुड़िक विषय आलोचना करवा। डिविजिव पॉलिटिक्स विभाजनकारी राजनीति। Communalism is often defined as a political doctrine that makes use of religious and cultural differences in achieving political gains. विशेष करिकी आमर राजनैतिक व्यक्ति विशेष माने सेमानंकर स्वार्थ साधन पाई सेमाने साधारण लोकन को व्यवहार करथांती एवं आमर जेहेतु भारत में अधिकांश लोक निरक्षर एवं सचेतनतार अभाव भितर बचुचंती एवं दारिद्रता होची आ गोटे समस्या जहां से सबुदिन सम्मुखीन होउछंती। तेणु एई सब परिस्थिति भितर सेमाने ठीक भूलर विचार करवा कि बेले बेले कष्टकर हो पाए एवं से समय रे राजनैतिक व्यक्तिविशेष माने तार फायदा नहीं तांकर हीन स्वार्थर साधन पाई सेमानकु को विभिन्न विभाग रे विभाजन करती एवं ता द्वारा हिंसा सृष्टि करबा पाई के मध्य चेष्टित थांती। इकोनॉमिक कॉजेस अर्थनैतिक कारण अनइवन डेवलपमेंट क्लास डिविजन्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट aggravates insecurity in the common man which make them vulnerable to political manipulation.
So as long as we are poor and only we think about our food, in the morning we will start thinking about what we will eat, how my family will survive, then in that condition it is not possible for us to decide what is right, what is wrong, what is morally correct, what is immoral. So taking this opportunity, the various vested interest groups, they take this and opportunity and they try to use those type of the people, and those poor people easily becomes vulnerable to those type of the criminal activities. So economic causes, underdevelopment, poverty, unemployment are the major contributory causes for the spreading communal violence. जदि लोक माने आमर अर्थनैतिक दृष्टिकोण समृद्ध होता से पाखे पर्याप्त सुजोग था, समय था से देश विषय चिंता करने, किंतु जेहेतु अधिकांश लोक बेकारी समस्या दारिद्रता सहित लड़ुंट प्रत्येक दिन, तो से देश कथा चिंता करने के पाखे अवकाश ना, सुजोग ना, समय ना। तो से समय विभिन्न स्वार्थन्वेषी गोष्ठीर लोक मैंने से गोष्ठीर लोक मानू निजर फायदा व्यवहार करती, जहाद्वारा सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाई था। History of communal riots. Probability of recurrence of communal riots in a town where communal riots have already taken place once or twice is stronger than in a town when such riots have never occurred. तेणुक ये जो सांप्रदायिक हिंसार इतिहास होची आउ गोटे कारण जो कि सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाए। तेणुक आम माने लक्ष्य करुचु जो अंचल गुड़िक गोटे थर सांप्रदायिक हिंसा घटी कौन कारण ताहले भविष्य में से अंचल पुनर्वार घटवार आशंका बहुत थाए एवं जो अंचल गुड़िक ए सांप्रदायिक हिंसार संपूर्ण विरत अच्छी सेठी नुआ करिक सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि होबार सुजोग भी कम थाए। तेणुक जो अंचल गुड़िक अधिक सांप्रदायिक प्रवण अंचल सेठी बारंबार सांप्रदायिक हिंसा घटवार सुजोग सृष्टि होता है। देन पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट prompted by political considerations and guided by their vested interest, political parties take decisions which promote communal violence. Sometimes the political parties and political leaders, they try to use the people by their appeasement policy, means suddenly they declare certain type of the policy by which people will immediately feel that their demands are going to be fulfilled, and by that they support that political party or that political leader. But those policy has no long lasting effect, and for this type of the appeasement policy sometimes communal violence are going to be spread out. संतुष्टिकरण नीति हूँ लोक मान को सामयिक भाव में संतुष्ट करवा, खुशी करवा। तेणुक विशेष करके आम लक्ष्य करुचु भारत में केंद्र सरकार कहतु, राज्य सरकार कहतु बा जेकोसी दल सरकार को आसतु, सेमानकर प्राथमिक आभिमुख्य रहुछि सामयिक भाव में लोकों को संतुष्ट करी सामयिक भाव में निर्वाचन को जितवा बा निर्वाचन वैतरणी को पार हवा। तेणुक से जो नीति प्रयोग करचंती तार कौन से दीर्घस्तुति प्रभाव रहूना, जेपरिक संगे संगे माने विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत करेंगे जोटा 5 वर्ष 2 वर्ष चलो, लोक मैंने खुशी होते, लोक मैंने भोट देवे, किंतु परवर्ती समय से खाली सरकार गादी को बचाइवाई चेष्टित, किंतु कौन कौ कारण जो सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाउची, क्यों कारण जो आमर जो देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि संभवपर हेउना ताकू संपूर्ण भाव में निराकरण करने कौन दल कौन सरकार आंतरिकतार सहित चेष्टा करूना, जो कि सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाउची। Isolation and economic backwardness of minority community. The failure to adopt the scientific and technological education and thus insufficient representation in the public service, industry and trade etc. has led to the feelings of relative deprivation among minority. तेणुक जो सांप्रदायिक
समुदाय जो रही जो मानकर संख्या कम बा संख्यालघु संप्रदाय सेमानंकर अर्थनैतिक अनग्रसरता होछि कारण जोथिपाई सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाउछि। तेणुकरी आम बारंबार से विषय आलोचना करुचे जो मानकर संख्या कम सेमानक पई कि विशेष करिकि सरकार कौन से प्रकार नीति प्रणयन करिनाहांती जहाद्वारा सेमानंकर ठीक भाव रे माने सेमानकर समानुपातिक प्रतिनिधित्व सबु स्तर रे रहिबो सरकारी माने चाकरी क्षेत्र हो किंबा शिक्षा क्षेत्र हो किंबा विभिन्न प्रकार पदपदवी क्षेत्र रे हो राजनैतिक पदपदवी क्षेत्र रे हो विशेष करके सेमाने बेले बेले संरक्षण को दायी करुचंती एवं सेमान ए संरक्षण जोटा रही आमर संरक्षण व्यवस्था ताकू नहीं कि संख्यालघु संप्रदाय भितर गोटे प्रकार असंतुष्टर निया कोहलुची एवं जोटा को सेमाने जेतेबेले किछि सुजोग पाती से सुजोग रे सेमाने सेटा व्यवहार करती बा से असंतुष्ट को सेमाने परिप्रकाश करिथांती। देन एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ए वीक लॉ एंड ऑर्डर इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द कम्युनल वायलेंस। प्रशासनिक स्तर रे आमर जो असफलता भी आउ होची गोटे कारण जो कि सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाउची। आमे बहुत थर देखिचु भारत रे आमर ता पूर्वर गोटे सप्ताह पूर्वर एमती गेस करा जाउथिबो अनुमान करा जाउथिबो एई अंचल रे हिंसा हबो किंतु आमर गोइंदा विभाग थिबा सत्ते आमर प्रशासनिक स्तरीय अधिकारी माने थिबा सत्ते से सेठी हिंसा घटे जनजीवनर क्षयक्षति मध्य होइथाय। तेणु जदि प्रशासनिक स्तर रे सेतिकी सचेतनता रुहंत्या एवं सेमाने सेतिकी दायित्वशील भाव में कार्यनिर्वाह करते ताले हिंसा को किछि मात्रा रोका जाई पारंता किंतु यह सबु समय संभव हो पारु नाही। प्रशासनर अवस्थिति सत्वे गुइंदा विभाग अवस्थिति सत्वे आमर सांप्रदायिक हिंसा व्यापुची एवं धनजीवनर क्षयक्षति घटुची। तो ये जो गुड़े एते गुड़े जो फैक्टर्स अच्छी भारत में एते गुड़े जो विभाग अच्छी जो कि सांप्रदायिक हिंसा वृद्धि पाउची सेटा भारत परी विभिन्नतार देश रे ही केवल संभव एवं जो देश में गोटे प्रकार लोक बास करुँच से धर्म को लेकिन हूँ बा जाति को लेकिन हूँ बा भाषा को लेकिन हूँ सेठी देश निर्माण गोटे सहज जिनस सिंपल टैक्स because there is uniformity in every sphere. But in case of India, as we have differences in every sphere, we have differences on the basis of caste, we have differences on the basis of the religion, we have differences on the basis of the language. So among so much type of the diversity, to maintain unity, it is a very difficult task. But despite of that, at the international level, we are maintaining our identity because of the diversity. किंतु वहाँ सत्य भी आंतर्जातिक स्तर रे भारत गर्वित तार ये विभिन्नता भितर एकता जेहेतु बजाय रखि पारिछि। Besides these factors, there has been also psychological factors which is also responsible for the communal violence. The lack of interpersonal trust and mutual understanding between two communities often result in perception of threat, harassment, fear and danger in one community against the members of the other community, which in turn leads to fight, hatred and anger phobia. So psychological factor is also responsible. If we are not psychologically strong, if you don't believe each other, then there will be problem. So the major community which are staying in India, whether major community or minority community, they should have mutual understanding with each other. They should have mutual belief with each other. But it is not happening. Sometimes minority is not ready to believe the majority group. Majority is not ready to believe the minority group. So this type of the disbelief, hatredness and your fighting with each other is creating communal violence. Then role of media. It is often accused of sensationalism and disseminates rumors as news, which sometimes resulted into further tension and riots between two rival religious groups. एटा बेले बेले देखा मिलूँ आजिकल बहुत संख्यार गणमाध्यम है किंतु आमे भावुलु बहुत संख्यार गणमाध्यम है आम गोटे निरपेक्ष तथ्य पाइबा किंतु तार ओलटा प्रभाव आम बर्तमान देखा पाचु। प्रत्येक गणमाध्यम तार केमती लोकप्रियता बढ़िबो सेथिपई कि चेष्टित एवं एटा बेले बेले मध्य लक्ष्य करा जाउची किछि गुजब को लेकिन से संवाद परिवेषण करुछंती एवं जहा द्वारा से गुजब द्वारा भी बेले बेले हिंसा आतंक भी सृष्टि हो जाउची गोटे गोटे समय। तेणुकरी गणमाध्यम किछि मात्रा रे सांप्रदायिक हिंसा प्रचार प्रसार करिबारे दायी।
Then social media has also emerged as a powerful medium to spread messages relating to communal tension or riot in any part of the country. So, presently we are using internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, unlimited social medias are there. So, through using those type of the media, now it has become a easy task to spread a news from one corner to the other corner. But sometimes we are facing its negative impact, and it is creating certain type of the sensation by spreading wrong messages, and which is also creating problems in the society. So, as every causes has also the remedies, every problem has the solutions. So, here also we can take certain type of the remedial steps or the measures to prevent the communalism. सांप्रदायिकवाद रही भारत में एवं तार मध्य विभिन्न कारण रही, किंतु जेहेतु सबू कारणर निराकरण अच्छी, तेणु आमर मध्य ए सांप्रदायिकवाद को प्रतिहत करने निराकरण अच्छी। तेणु राज्य सरकार हूँ बा केंद्र सरकार कौन पदक्षेप ग्रहण कले आम सांप्रदायिकवाद को प्रतिहत करिपरिबा से विषय में आलोचना करवा। There is need to reform in present criminal justice system, speedy trials and adequate compensation to the victims may act as deterrent. So, present criminal system should be modified, and there should be speedy trial system and adequate compensation should be provided to the victims. आमर सांप्रदायिकवाद प्रतिहत करने को हेले आमर जो वर्तमान न्यायपालिका व्यवस्था ता देहरे टिके परिवर्तन आनिबा को पड़िबो एवं आमर न्यायिक व्यवस्था को त्वरित करने को पड़िबो। शीघ्र द्रुत गति रे केमती समस्तक पाखरे न्याय पहुँचीबो, कहीं आमर गोटे प्रवाद अच्छी विलंबित न्याय न्याय नुहे, जोटा डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। जदि जस्टिस पाइबारे डिले हैला ताले से जस्टिस न पाइबा संगे समान। तेणुक ये न्यायिक व्यवस्था जदि त्वरित करा जाई परिबो एवं जो माने पीड़ित जो माने हिंसा द्वारा सम्मुखीन होइकि विभिन्न प्रकार हरैचंती किए निकट संपर्क को हरैछि किए धन संपत्ति हरैछि तांकु आर्थिक प्रोत्साहन मिलिबा सहित तांकु आर्थिक प्रोत्साहन ता सहित मानविक सपोर्ट मध्य सहायता मध्य मिलिबा आवश्यक। Then increase in representation of minority community and weaker sections in all wings of law enforcement, training of forces in human rights, specially in the use of firearms in accordance with the UN Code of Conduct. आमर जो विश्व जातिसंघ अच्छी सबुबले कार्यरत किपरि सांप्रदायिक हिंसा प्रतिहत हम, किपरि आतंकवाद विश्व मूलोत्पाटन हम। तेणुक से तार जहाँ संहिता अच्छी से संहिता अनुसार आमर जो माने संख्यालघु संप्रदाय अच्छी से प्रत्येक क्षेत्र में किपरि प्रतिनिधित्व मिलिबो सेथिपाई कि पदक्षेप ग्रहण करवा एवं तांकु मानविक अधिकार संक्रांतीय सचेतन करवा एवं विभिन्न आईन प्रणयन क्षेत्र में से माने जेपरि तांको निकटरे पहुँचबो आईनटा ठीक भाव में पहुँचबो सेथिपाई कि प्रचेष्टा करवा आवश्यक। Codified guidelines for the administration, specialized training for the police force to handle communal riots, and setting up of special investigating and prosecuting agencies can help in damping major communal disgruntlement. So, administration is responsible because we have a welfare state and almost all the principles are going to be implemented, executed through the administrative officials. So, administration should be responsible towards fulfilling the interest and objectives of the human beings living within a state, and police they are also responsible for maintenance of law and order situations. So, proper training should also be given to the police personnel to control the communal violence, and investigating agency should be make viable and should be make efficient by which they can be more alert regarding the communal violence. तेणुक आमर प्रशासनिक अधिकारी ठारू आरंभ करी आमर पुलिस कर्मचारी मानक पर्यंत समस्त को सठिक प्रशिक्षण मिलवा आवश्यक, जहाद्वारा से माने सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रण करिबारे सक्षम हेबे एवं आमर जो गोविंदा विभाग अच्छी से एते सक्षम करा जिबा आवश्यक से जेमती संपूर्ण तथ्य आगरू पाई पारिबे एवं हिंसा रोकिबारे से पदक्षेप ग्रहण करि पारिबे।
emphasis on value oriented education with focus on the values of peace, non-violence, compassion, secularism and humanism, as well as developing scientific temper instinct as a fundamental duty, and rationalism as core values in children both in schools and colleges, universities can prove vital in preventing communal feelings. So, spread of education or spread of value based education should be the other steps by the government. So, all of us are educated, but all of us have not been value educated from the point of view of value based. आम समस्त शिक्षित किंतु समस्त पाखरे मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा पहुँचे ना कहीं आमर संविधान जेबे ठारू कार्यकारी हेलाणी सेबे ठारू आमर मौलिक कर्तव्य रे रही जे आमे आम भितरे मानविकता सृष्टि करवा, आम भितरे शांति, आम भितरे अहिंसा, आम भितरे दया ए प्रकार चिंताधारा बा भावधारा को आमे प्रणयन करवा एवं कार्यतः सेटा कार्य लगेगा। मात्र एसबू सत्वे भी आमर जो हिंसा घटुची से हिंसा समय कौन सी गोटे पशु मनीष प्रति खराब व्यवहार करूना, मनीष ही मनीष प्रति खराब व्यवहार करुच्ची बा खराब प्रदर्शन करुच्ची बा क्षति पहुँचाऊँगी। तो से आमर मूल्यबोध भित्तिक शिक्षा समस्त निकटरे पहुँचाइबा जहाद्वारा समस्ते सठिक मार्ग में परिचालित हेबे एवं विशेष करके विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर में पढ़ुथिबा छात्र छात्री माननकु सांप्रदायिक हिंसा को रोकिबा पाइंकी कौन किपरि सेमानकर व्यवहार हवा उचित से विषय से सचेतन करने आवश्यक। Government can encourage and support civil society and NGOs to run projects that help create communal awareness, build stronger community relation and cultivating values of communal harmony in next generation. एटा केवल सरकार सांगरे ये संपर्कटा ये जो सांप्रदायिक हिंसा रोकबाटा या केवल सरकार दायित्व नुह, आमर जो बेसरकारी अनुष्ठान अच्छा, आमर जो बुद्धिजीवी अच्छा, आमर जो समाज अच्छी नागरिक समाज अच्छी समस्ते ए दिगरे सचेतन एवं चेष्टित हवा आवश्यक। किपरि विभिन्न संप्रदाय भितर सहयोग रहिबो, सहावस्थान रहिबो एवं आम समाज रे सौहार्द रहिबो सेथिपाई कि समस्ते चेष्टित हवा आवश्यक। There is a need for minority welfare schemes to be launched and implemented efficiently by administration to address the challenges and various forms of discrimination faced by them in jobs, housing and daily life. जो संख्यालघु संप्रदाय माने जो प्रत्येक दिन से माने चाकरी क्षेत्र में बंचिबा क्षेत्र में जो संघर्षमय जीवन अतिवाहित करुछंती तांको सेथरु मुकुलिबा पाई कि सरकार जनमंगल कार्यक्रम प्रस्तुत करने आवश्यक जहाद्वारा से माने चाकरी क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में आनुपातिक भाव में सेमानकर प्रतिनिधित्व रहिबारे सेमाने सक्षम हेबे। A proactive approach by National Foundation for Communal Harmony, the body responsible for promoting communal harmony, is needed. There is a body known as National Foundation for Communal Harmony. आमर गोटे जातीय स्तर में गोटे संगठन काम करुच्ची जार काम होची सांप्रदायिक सौहार्द रक्षा करवा। तेणु खाली संगठन गठन करदेले हम ना, से संगठन किपरि ठीक भाव में कार्य संपादन करिवो सेथिपाई कि मध्य पदक्षेप ग्रहण करा आवश्यक। सो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी प्रोवाइड्स assistance for the physical and psychological rehabilitation of the child victims of communal, caste, ethnic or terrorist violence besides promoting communal harmony, fraternity and national integration. तेणुक आमर ये जो जातीय संहति संगठन आमर सामाजिक भाव में एवं मनस्तात्विक भाव में शारीरिक भाव में जो व्यक्ति विशेष माने पीड़ित सेमानंकु विभिन्न प्रकार सहायता प्रदान करुच्ची एवं सेमानंकु सौहार्द रक्षा करबा पई भातृत्वर भाव प्रचार करबा पई एवं जातीय संहतिर रक्षता पई कि सेमाने चेष्टित अछंती। A legislation is required to curb the communal violence. So, the Communal Violence Prevention, Control and Rehabilitation of Victims Bill 2005 must be enacted soon. गोटे आईन हवा दरकार जहाद्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोका जाई पारिबो। 2005 रे गोटे चिठा रही जहाँ एपर्यंत हलाणी पेंडिंग अच्छी, तो सेटा को किपरि कार्यकारी करा जाई पारिबो, किपरि
प्रणयन करा जाई परिबो सेथिपाई कि सरकार चेष्टा करिबा आवश्यक। सो दिस इज रिगार्डिंग द communalism in India. We are facing communalism at various spheres, and no state is free from the feelings of the communalism. So communalism has become a great challenge to nation building in India, and as we know that nation building always aims at the development of the society, development of the nation, and always nation building aims for a developed nation, for an integrated nation. So communalism should not work in that way. It is become a great challenge, and for that reason it is a task that we should avoid communalism. जेहेतु जाति निर्माण क्षेत्र में सांप्रदायिकवाद गोटे बड़ प्रतिबंधक भाव में सृष्टि होती। वर्तमान एटा भारत सरकार दायित्व किपरि सांप्रदायिकवाद को प्रतिहत करवा, कहीं आम भितर जिते विभिन्नता अच्छी जाति को लेकिन भाषा को लेकिन ताकू नहीं आम एत सांप्रदायिक हिंसार सम्मुखीन होना जी आम सम्मुखीन हो सांप्रदायिकवाद को नहीं। तेणु से आमर जातिर उन्नति अभिवृद्धि पाई एवं देशर एकता बजाय रखा हेले आमर सांप्रदायिकवादर विलोप निहाती आवश्यक। एवं ए सांप्रदायिकवाद को आम केमिति विलोप करिपारिबा ना जदि आमे विभिन्न प्रकारर जहाँ पदक्षेप रही ताकू सठिक भाव में कार्यकारी करिपारिबा एवं आम भितर जो डिविजिव फोर्सेस अच्छी विभाजनकारी जो गोष्ठी अच्छी तांको विरुद्ध जदि आम दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं पारिबा एवं ता सहित सरकार जदि सक्रिय भाव में कार्य करिवे, आंतरिकतार सह कार्य करिवे, यही जो विभाजनकारी गोष्ठी विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पाई दल मत निर्विशेष ताहले आमे किछि मात्रा रे सांप्रदायिकवाद को प्रतिहत करिपारिबा। सो to eradicate communalism, though it is a difficult task, but it is not impossible, and it can be done if government tries to achieve that. As communalism has become a great challenge to the nation building, but nation building is essential for the development of the nation, for development of the society, because if we will not work hard towards the nation building, then we will be backward at the international level. So in order to be forward at the international level, we should have to eradicate our various problems like communalism, casteism, regionalism, or the terrorism. So we have got the nation, we have got various types of the people, but despite of our diversity, we should try to maintain unity at every cost. So it is the duty of the government as well as also the civil society to be careful about the conditions by which we can be able to maintain nation building. जाति निर्माण एटा केवल सरकारंकर दायित्व नुह, एटा समस्त व्यक्तिविशेषकर दायित्व। तेणुक देश भितर थिबा समस्त संगठन, समस्त राजनैतिक दल, नागरिक समाज समस्ते देश निर्माण क्षेत्र में चेष्टित होगा आवश्यक। आम भितर जेते प्रकार रही विभिन्नता से विभिन्नता सत्वे आमे एकता बजाय रखिबा, एंड वी ऑलवेज शुड ट्राई टू अचीव आवर नेशनल इंटरेस्ट सरेंडरिंग आवर नैरो पैरिचुअल इंटरेस्ट। आमे समस्ते देशर बृहत स्वार्थ पाई कार्य करिबा, सेथिपाई कि जदि आवश्यक पड़े आमे आमर व्यक्तिगत स्वार्थ को जलांजलि देबा। सो कम्युनलिज्म हैज नॉट ओनली वीकेंड national unity and integrity, but also has deferred India at the international level. तेणुक आंतर्जातिक स्तर में आम जो निंदित होइछे आमर सांप्रदायिकवाद नीति को लेकिन से मुकुलिबा पाई कि हेले आमको पुनर्बार आमर जाति गठन दिगरे काम करबा पाई कि पड़िबो। आम भितर जेते सबु गोष्ठी अच्छी सबु गोष्ठी को उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन पूर्वक सेमानक भितर किपरि सहावस्थान रहिबो से दिगरे चेष्टित हवा आवश्यक। टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट ग्लोरी, एवरी कम्युनिटी शुड कोऑपरेट ईच अदर इन मेंटेनिंग म्यूचुअल हार्मनी. So every community has its interest of its own, and that's why we have been given the freedom to form our own association. प्रत्येक संप्रदायर निजस्व इच्छा अच्छी आवश्यकता अच्छी एवं सेटा को पूरण करबा पई कि हमको भी संविधान देइछि, स्वाधीनता देइछि, आमे हम निजर संगठन गठन करि परिबा, हमर आवश्यकता पूरण करबा पई कि एवं से दिगरे
କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କୁଚାରଟନା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହେୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାସ୍ ଆୱାରନେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍। ସବୁବେଳେ ଆୱାରନେସ୍ ବା ସଚେତନତାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସମାଜରେ। ଆମର ସୋସାଇଟିରେ as long as we are not aware, we will face various problems. So only formal education is not sufficient to eradicate problems from our society. ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଫର୍ମାଲ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ସଚେତନ ନ ହେବା ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଆମର ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯଦି ବଜାୟ ରଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ସୋ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ we should maintain mutual cooperation, mutual understanding with each other, and for that we should also be aware about our fundamental rights, fundamental duties, and whatever constitutional provisions, whatever rules and regulations we have. ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଆମକୁ ସଚେତନତା ହିଁ ଆମର ସଫଳତା ଦିଗକୁ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନତା ହିଁ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁକି ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ବିଭିନ୍ନତା ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଏକତା କଥା ଆସିବ, ସଂହତି କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସୋ awareness plays an important role for achievement of the nation building. The civil society should create possible opinion against communalism. So entire civil society consisting of all the religious groups, different linguistic groups of the people, they should work hard for the development of the society, for the development of the nation. So our motto should be to maintain unity in diversity, by which nation building can be maintained. Though nation building has facing various challenges, but if we will be our citizens will be then we can cross this challenge and we can make our nation more developed one, and it can have a special identity at the international level. Thank you.